great reputation. We all feel privileged to have you, sir, with us. A face of humanities, the person who is known for his smile, gentle smile, humbleness, and vast knowledge. Put your hands together for Honorable Dilip sir. Welcome. And the things go with him like anything. Honorable Sunil sir, please welcome. Welcome to the part 1 presentation. Likewise, some more presentations will be there. So we'll keep going and keep rocking. Welcome, the RRR team is here with me. Yudhishthir sir, welcome. I'm not getting your claps, my dear. Yeah, that's good. Dear principals or directors, all teachers and my dear friends, today I am presenting here an English thought. Myself, Rainbow Bharat, on behalf of class 6B. Earth rejoices over birds, breathing and peaceful step. Let every breath, every word and every step make the Mother Earth proud of us. Thank you. Everyone is me, but not every man's way. A very happy and peaceful morning to everyone. I am Yashashri from grade 12 science, and we will be your host for today's assembly. So let us start our prayer. Start the day with the thought of the day. I would like to call Bharat of class 6B to present the thought. In my life, only those kids who listen.
far-reaching consequences impacting human health, economies, and well-being of future generations. We can all make a difference by adopting sustainable practices in our daily lives. This includes reducing our carbon footprints, conserving water, minimizing waste, and supporting environmentally conscious businesses. On this day, let's remember our responsibility to protect and cherish our planet. We must act now to address the environmental challenges we face, ensuring a sustainable future for generations to come. Every action counts in our collective efforts to create health and greener world. Thank you. Richest person of the world. The interview was going on, and the question was this: that, dear sir, how come? What was that work? What was that thought, the idea that was working behind your brain? That you have become the richest man in the world. How have you managed these things? My dear lovely students, listen the answer. The wealthiest person says that most of the people, they wait for the chance and the opportunity. They wait for the horse of opportunity to come before them. And when the horse of opportunity, the chances is coming before them, then they jump. And the 99% chances are there that when they jump, they miss. And the horse of opportunity in the chances, that is riding so fast that it misses, it runs away, and the person who was waiting falls down. The interviewer said, wow, then what did you do? He said, simple. What I did, I never waited for the horse of opportunity to come. I kept jumping all the time. I was continuously jumping, without waiting, without wasting the time. And I don't know, in my that jumping, when the horse came inside and I was riding the horse, and today I am riding that horse of opportunity, and you are awarding me here as a person of the richest wealth. Dear students, by this quote, what we learn is that we should not wait. Because in waiting, most of the times we may miss. The chances are more of missing. So you should be constantly putting your efforts. Keep doing your efforts without wasting the time, without waiting. And one day you will feel, you will find that you are having your goal. It's a very special time today. For me especially, for all the students especially. Why? Because in this morning assembly, we are going to reward. We are going to award the mentors. The mentors who shape you. The teachers who care for you. The teachers who are dedicated for the mission of uplifting your standard, raising your standards. In this reference, it's a biggest opportunity, a great good luck of mine when I'm going to announce some awards, and with your clap, it would be a recognition, it would be an awarding time and a most prestigious time, because this moment when comes in somebody's life, they feel very much motivated, inspired,
and they feel that their work, their worth has been notified, recognized. मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से तैयार होकर बैठ जाइए। आप लोग अपने गुरु जी का सम्मान करने जा रहे हैं। द मैनेजमेंट फील्स प्रिविलेज। One scholarly gentleman, you will always find him either in the books or in the classes. And when he is in the class is complete, silent. Everyone's favorite, my most favorite, Honorable Govind Soni sir. With a huge round of applause, please. So he's a great dancer. Also, you can see he's tapping. Yeah, this is what. Because he's a great scholar. Welcome. You can see them. These are some inspiration for you. You can see these faces. And it's the highest reward and recognition and it's a gratitude for you. Chavi Vaishnav coming on the stage for second rank award. In English, essay writing, RPS Mahi Munu. She is already on the stage and received your award. RPS Yashasvi, grade 12. The drawing competition second ranker. The sports captain of RPS is receiving award from RPS Yashasvi. Quickly now. The second rank drawing competition winner. Next, the first rank Hindi handwriting. Yogshree. Welcome, Yogshree. RPS Yogshree. Hindi essay writing competition. Essay writing competition winner, first rank, RPS Ruvika Vaishnav, grade 8B. Thank you. Now we request Honorable Ma'am to kindly
share and give words of blessing, words of wisdom and words of intellectuals to our RPS students. Most welcome, ma'am. Achievers, stay near the stage only. RPS Vidisha Prajapat, most welcome. RPS Naman. Congratulations, Golden Singh. And this is time for group photo. Max Olympiad Foundation winners, achievers. Congratulations. Get ready for the group photo. Right. RPS Alia Kaushal. The house vice captain, the Shivalik House vice captain Alia Kaushal, also shown her excellence in Maths Olympiad. Well done, all the champions. Congratulations, all the champions. RPS Yashvardhan. RPS Yashvardhan Parimal. RPS Khyati Singh. Welcome on the stage. RPS Divyam Soni. Yes, everyone put your hands together for a very dynamic, a very gentle, a man with ideas, a devoted soul, a very strong pillar of Rainbow Public School. Here we recognize, value your work and your son, a man of discipline. Most welcome. RPS Chavi Vaishnav. The second rank she grabbed. RPS Chavi Vaishnav coming on the stage for second rank award. The drawing competition second ranker. The sports captain of RPS is receiving award from math. RPS Yashasvi, quickly gone. The second rank drawing competition winner.
Next, the first rank Hindi handwriting. Yogashri. Welcome, Yogashri. RPS Yogashri. Hindi essay writing competition. English essay writing competition winner, first rank, RPS Dhruvika Vaishnav, grade 8B. RPS Dhruvika Vaishnav, grade 8. And last but not the least, from drawing competition, ranked first, grabbed by RPS Vaibhav Parmar. Welcome on the stage, RPS Vaibhav. Drawing competition first rank. Congratulations Dhruvika Vaishnav for English essay writing. First rank award is in your hand. RPS Vaibhav Parmar. Most welcome. Drawing competition first winner. Now the time for group photo. All welcome in the front side for the group photo. सर्टिफिकेट जीते and a third clap for those who participate but doesn't get medal or prize. And fourth for those who will participate in next year. Yes or no? Anyone of from your side can raise your hand कि मैं करूँगा अगले बार participate? Sure? Keep it up. Yeah. Okay, good. So सबसे important ये बिल्कुल नहीं होता कि हम मेडल जीत रहे हैं या नहीं. सबसे important पता है क्या होता है लाइफ में? हम participate कर रहे हैं या नहीं. सबसे important वही है. You just enjoy your journey. आप participate करिए, आप पढ़िए, खूब अच्छे आगे बढ़िए. Whole world is yours. Never blame, never stop your limitations, never underestimate yourself. You are cream. और आजकल के जो बच्चे हैं आई कैन से तूफान है. हाँ या ना? तुम्हारे घर में सुनते हो या नहीं सुनते हो कि हमारे बच्चे तो हमारे समय तो इतने शैतान होते ही नहीं थे. सो आई टेल यू कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कलर्स. हमने कभी नहीं सुना जब हम स्कूल में थे कि 99%, 98%. आई नेवर रिमेंबर. हमारे समय शायद 90 वाला काफ़ी होता था. 88, 89 वाज अ टॉपर. आज 99 पे भी बहुत लाइन है, 100 के पे भी बहुत लाइन है. सो यू आर वेरी क्रीम. आप एक ऐसे समय में पैदा हुए हो जहाँ बहुत स्कोप है आपके पास अचीव करने को. सो सबसे पहले तो ये खूब अच्छे से एक छोटा सा प्रिंसिपल दूंगी आप लोगों को. Want to listen? सुनना चाहोगे? So I just like to interact with both sides. मतलब my interaction was not from only one side. आप में से कितने ऐसे हो जो टीवी देखते देखते होमवर्क करते हो? No. To be honest yourself. छोटा हाथ अपने लिए उठा लो, है ना? बहुत सारे ऐसे हैं जो टीवी देखते हुए होमवर्क करते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो खाना खाते खाते होमवर्क करते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो रात को कहते हैं सुबह करेंगे, और सुबह कहते हैं दिन में करेंगे, और दिन में कहते हैं शाम को करेंगे. Yes or no? So I just tell you one thing: do whatever you want, but with your full and 100% concentration. If you want to do your homework, do only and only your homework. If you want to watch movie or TV or cartoon or whatever the serial, then watch itself. उसे मिक्स मत करो कि इधर से मम्मी की आवाज़ आ रही है, इधर से कोई कह रहा है होमवर्क नहीं किया, इधर से कोई कह रहा है ये काम तो किया ही. No. If you want to watch movie, that means entirely you want to watch movie. प्रिंसिपल साहब, डायरेक्टर साहब, सेमेस्टर स्टाफ और बहुत ही प्यारे बच्चे. फर्स्ट ऑफ ऑल अ ग्रेट अप्लॉज फॉर जिन्होंने आज मेडल्स जीते, जिन्होंने आज सर्टिफिकेट्स जीते. सो फर्स्ट उनकी क्लैप जिन्होंने मेडल्स जीते. सेकंड क्लैप जिन्होंने सर्टिफिकेट जीते.
for those who participate but doesn't get medals. And 4 for those who will participate in next year. Yes or no? Anyone of from your side can raise your hand कि मैं करूँगा अगले बार participate? Sure. Keep it. Yeah. Okay, good. So सबसे इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल नहीं होता कि हम मेडल जीत रहे हैं या नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या होता है लाइफ में? हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं. सबसे इम्पोर्टेंट वही है. यू जस्ट एंजॉय योर जर्नी. आप पार्टिसिपेट करिए, आप पढ़िए, खूब अच्छे आगे बढ़िए. होल वर्ल्ड इज योर. नेवर ब्लेम, नेवर स्टॉप योर लिमिटेशंस, नेवर अंडरएस्टिमेट योरसेल्फ. यू आर क्रीम. और आजकल के जो बच्चे हैं आई कैन से तूफान है. हाँ या ना? तुम्हारे घर में सुनते हो या नहीं सुनते हो कि हमारे बच्चे तो इतने, हमारे समय तो इतने शैतान होते ही नहीं थे. सो आई टेल यू कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कलर्स. हमने कभी नहीं सुना जब हम स्कूल में थे कि 99%, 98%. आई नेवर रिमेंबर. हमारे समय शायद 90 वाला काफी होता था. 88, 89 वाज अ टॉपर. आज 99 पे भी बहुत लाइन है, 100 के पे भी बहुत लाइन है. सो यू आर वेरी क्लीन. आप एक ऐसे समय में पैदा हुए हो जहाँ बहुत स्कोप है आपके पास अचीव करने का. सो सबसे पहले तो ये खूब अच्छे से एक छोटा सा प्रिंसिपल दूंगी आप लोगों को. Want to listen? सुनना चाहोगे? So I just like to interact with both sides. मतलब my interaction was not from only one side. आप में से कितने ऐसे हो जो टीवी देखते देखते होमवर्क करते हो? नो. टू बी ऑनेस्ट योरसेल्फ. छोटा हाथ अपने लिए उठा लो, है ना? बहुत सारे ऐसे हैं जो टीवी देखते हुए होमवर्क करते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो खाना खाते खाते होमवर्क करते हैं. बहुत सारे ऐसे हैं जो रात को कहते हैं सुबह करेंगे, और सुबह कहते हैं दिन में करेंगे, और दिन में कहते हैं शाम को करेंगे. Yes or no? So I just tell you one thing. Do whatever you want, but with your full and 100% concentration. If you want to do your homework, do only and only your homework. If you want to watch movie or TV or cartoon or whatever serial, then watch itself. उसे मिक्स मत करो कि इधर से मम्मी की आवाज आ रही है, इधर से कोई कह रहा है होमवर्क नहीं किया, इधर से कोई कह रहा है ये काम तो किया ही. No. If you want to watch movie, that means entirely you want to watch movie. If you want to play, that means you want to entirely play. कभी भी कामों को मिक्स मत करो. खेलना है मतलब सिर्फ खेलना है, पर टीवी देखना है मतलब सिर्फ टीवी देखना है. पर ये का ये प्रिंसिपल उसके साथ भी होना चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लाइफ की, कि पढ़ना है मतलब सिर्फ मन से खेलते हो ना. हाँ या ना? खेलते समय पीछे से आवाजें आने लगती हैं, आ जाओ भाई घर आ जाओ, अब आ जाओ. तो जब खेलते समय सारी चीजें भूल जाते हो, टीवी देखते समय सारी चीजें भूल जाते हो, तो पढ़ते समय भी आपको कैसे पढ़ना है? सब भूल जाओ. केवल बुक ही याद होनी चाहिए, केवल बुक ही दिखनी चाहिए. यू विल अचीव व्हाट यू वांट विथ लेस टाइम. कम समय में आपको याद हो जाएगी. सेकेंड, एक आप लोगों की बहुत अच्छी जनरेशन की एक बहुत ही अच्छी खूबी है कि आप लोगों को है ना ईश्वर ने बहुत दिमाग दिया. सो यू जस्ट रिमेंबर एवरीथिंग इन वन लाइन, कि एक बार पढ़ा और याद हो गया. कितने ऐसे लोग हैं जो चीजों को रिवाइज करते हैं? इफ यू वांट टू समथिंग, टू बी अ कलेक्टर, टू बी इंजीनियर, टू बी अ डॉक्टर और व्हाटएवर, सो मेनी फील्ड्स आर देयर. टू बी अ कलेक्टर आल्सो, टू बी अ कहीं पर भी आप जाना चाहते हो, यू नीड वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज रिवीजन. आप बहुत पढ़ते हैं लेकिन हर बार नया पढ़ते हैं. कितनों की प्रॉब्लम है कि हर बार पढ़ते हो लेकिन नया ही चैप्टर पढ़ते हो? You have to start with your revision. This is a very important tip if you want to